This mechanism is of electromechanical mechanism. It is electrically power supply giving and mechanically operated. So it is called electromechanical. It is controlled through PLC and SCADA system, sir. So we can monitor the entire system healthiness and operation and the position of the bridge through the SCADA. So the SCADA only monitoring every equipment and healthiness for the bridge operation, sir. What is the process of operation of this bridge? Sir, this process is of, first of all, this bridge for this vertical lifting is of 17 meter for the purpose of this boat sailing towards here and there. So for this movement, first of all, port officer will give the permission to officer of railway, that means bridge in charge. So he will approach line block to the railway, and then once he got all the line blocks and all, this section will be blocked through signal. So no train is permitted during the lifting of the bridge. For that purpose, we are giving EKT. EKT is the knob which is disconnecting the track between this Pamban and Mandapam section. So once the feedback is we have received, that start button gets blinking for this operation of the bridge. So this is the first preparedness of the bridge operation. So once it is came start, so the bridge operator can, once all clear, he can give the start button. Once it is given start means that SCADA will check the healthiness of all the equipment, that electromechanical equipment and power supply, everything. It will continuously monitor and it will give the healthiness. If anything is problem, it will give the highlight to the operator that this is the problem, so bridge cannot be operated. If all is good, then it will give the next button to OHE open. OHE is also available in this bridge. Earlier bridge no OHE and all. This bridge OHE also available. This OHE is of 25 kV supply. So with the supply, we are not supposed to lift the bridge. So for that purpose, we are isolating the supply between this lifting operation of this bridge portion by switching off and earthing. So once it is done, then motor will start, brake will release, and motor will start the lifting operation. This is the peculiar, this is the principle of this mechanism, sir. And so, how much time it will take full process? Sir, for lifting process, 5.30 seconds, it will reach 17 meters, sir. Yes, sir. And how much energy? Sir, energy is of current in the sense 100 amps to 120 amps only it will consume, because we are having the variable frequency drive, harmonic drive. So it will control the motor operation, direction and all, everything through the harmonic IGBT based harmonic control rectifier, that one only. So that consumption will be very less only. And this power consumption also very less, 100 to 120 kilowatt hours only for this entire operation. सर, हम पाम्बन ब्रिज पर खड़े हैं। अभी हमने देखा कि ये इतना अपलिफ्ट किया गया, फिर डाउनलिफ्ट किया गया। किस तरह से ये काम कर रहा है सर, ये ब्रिज? पूरे देश को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए यह पम्बन ब्रिज काफी महत्वपूर्ण है। यह नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोगों ने यूज किया है, और इसमें व्यवस्था की गई है कि सामान्य तौर पर रेलगाड़ियों का परिचालन हो, और जब भी आवश्यकता हो तो पुल के नीचे से हम बड़े बड़े जहाज को भी एक ओर से दूसरी ओर ले जा सकने में सक्षम होंगे। करीब 550 करोड़ की स्वीकृत लागत है इस ब्रिज को बनाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि पहले इसमें अभी सिंगल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, लेकिन प्रोविजन डबल लाइन का रखा गया है, यानी कि जब भी आवश्यकता होगी हम लोग इस पर और निर्माण कार्य करके डबल लाइन की गाड़ियों को भी चला सकते हैं। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ब्रिज है। यह एक वर्टिकल ब्रिज है, और दुनिया में इस प्रकार के ब्रिज एक या दो ही हैं। भारत की दृष्टि से यह न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिज है, बल्कि इसका अपने आप में सामरिक महत्व भी है। और आप देखेंगे कि इस ब्रिज के बन जाने से पूरे देश में भारतीय इंजीनियरिंग का जो है सिक्का जमेगा, और हमारे देश की उपलब्धियों में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।